रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स I will describe over here the full forms and short forms of the auxiliary verbs, and especially negative and affirmative forms. First of all, there is am. Short form of affirmative short form of am in the affirmative context is apostrophe am, and ain't is the negative short form of the auxiliary verb am. Am not is not you can say formal. It's not. It's wrong to say am not. And is apostrophe s isn't is the short form, and or apostrophe re is the affirmative form, and aren't is the negative form. Was, wasn't, and the short form of the word is weren't. Have apostrophe ve is the affirmative short form, and haven't is the negative short form of have not. In the same way, hasn't is the short form of has not. You can also write has not or hasn't. ये जो शॉर्ट फॉर्म है आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स उसमें मोस्टली जो है शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज़ की गई हैं. Short forms, if you don't know the short forms of the auxiliary verbs, you will not be able to judge the correct tense. I will give you examples later. And the next is the देखिए जब हम has है तो इसकी short form apostrophe s है affirmative context में, और इसकी भी apostrophe s है. इसको मैं explain करता हूँ examples के थ्रू. इसी तरह से हमारे पास had है तो इसकी short form affirmative में apostrophe d लगा होता है. hadn't इसकी नेगेटिव फॉर्म में will है तो आई डबल apostrophe डबल एल शॉर्ट फॉर्म affirmative. won't इसकी ये बड़ा टेक्निकल है और ये क्वेश्चन पे एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ will not. will not short form is won't. In the same way shall apostrophe double l, तो shall not की जो शॉर्ट फॉर्म हम बनाएंगे नेगेटिव फॉर्म जो है वो शॉर्ट है shall not की. इस तरह से would है तो ये apostrophe d. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि had का भी apostrophe d है, would का भी d है. ये किस तरह से हम डिफरेंस करेंगे मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, और किस तरह से आपको ये क्वेश्चन आ सकता है ये भी मैं बताऊँगा. तो यहाँ पे would की हम जो नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं wouldn't है, और इस तरह से शुड की फॉर्मेटिव में तो नहीं है तो शुडेंट है, शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म. इस तरह से डू है तो डू की जो नेगेटिव फॉर्म है वो डू नॉट फुल फॉर्म है, और डोंट नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म. डज की डजंट है. तो यू नो कीप इन माइंड हाउ वी मेक द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ दीज ऑक्सिलरीज. कीप इन माइंड दिस इज डू नॉट. फर्स्ट लेट्स सपोज दिस इज डू नॉट. How we will make? We will omit only o and use apostrophe. In all these negative forms we have omitted o, and we have written combined didn't, don't, doesn't, and can't. This is the short form of cannot. But now there is we will remove omit over here and as well as o, and this is the correct short form of can't. And in the same way could not is the full form negative form, and couldn't is the short form. couldn't यहाँ से हमने o को omit किया. इस तरह से may है managed, meant, and oughtn't. ought not की है, ये may not की है, और mustn't. This is the short form of must not. And the next is the ain't is also used in your textbooks. Ain't you ashamed of yourself? Thank you मैम ने उसने यूज़ किया. Ain't you ashamed of yourself? Ain't is the short form of is not, or am not, या or not, have not, has not, have not.
ये किसी भी जो है ना इनमें से किसी के लिए भी एंड को हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये सेंटेंसेस में ये शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं तो हमें टेंसेस को किस तरह से जज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स आनी चाहिए कि स्पेलिंग्स में क्या चेंज आ रही है, किस तरह से हम ओ को ओमिट कर रहे हैं और अपोस्ट्रोफी का यूज़ कैसे हो रहा है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है। फर्स्ट करें मैं यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ अपोस्ट्रोफी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी की करेक्ट प्लेस देखनी है आपने, और कौन सा लेटर ओमिट होते हैं शॉर्ट फॉर्म बनाते हुए, ये जानना भी ज़रूरी है। अब मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि ये शॉर्ट फॉर्म्स किस तरह से स्टूडेंट्स को टेंस को अंडरस्टैंड करने में कंफ्यूज करती हैं। आपकी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल्स मैं लिखता हूँ। आई थिंक यूड बेटर लीव, बटन बटन में से ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स। आई थिंक यूड बेटर लीव, आई थिंक यूड better leave. Here is the short form, apostrophe D is there. How we will judge or guess this is I have told you there is the you can say apostrophe D over here had short form and affirmative would short form. How can we guess? Is it would? Is it would or had? Actually, this is we will judge from over here. What is the structure over there? Would better is not used nowadays in any, you can say it's have become informal, and it's a had better. Actually, the structure is the expression is the had better. So we have judged this is not a would, but it's a had, because there is the better, had better is the expression used combined used to suggest something. In the same way, the other example is there. I think I'd rather not discuss it anymore. I'd rather not discuss it anymore. Here the expression see, I'd rather, it's not had rather. If we think it is had, it is wrong, because there is a rather. It's would rather. So here we have judged from the structure that this is a would, not had. And the other thing, these are the would rather and had better expressions, but except these expressions, these we can also judge. How can we judge? For example, I'd done my work. I'd done my work. Here, let's see, had is would or had. Would or had. Actually, how we can judge? We can judge by this form of verb. Here is the done. Would done, this is wrong structure, because we can't use third form with modal verbs. So here, if there is a done, it means this apostrophe D is had. I had done my work. In this way, we can judge the tense of the you can say given verb or given sentence. Another example, let's see. It won't take time. It won't take time. It won't take long. It won't take long to explain it.
What's this? This is the short form of will not. This is will not. You must know this is a short form will not. In the same way, she's had a fever for 3 days. How can we judge? This is the head. Actually, this is the V third. Or what will be over here? It is, if we consider is, या अगर हम इसको is consider करते हैं और V third यहाँ पे आ रही हो had के साथ, यहाँ पे is had, ये is had बन रहा है, क्या ये सही स्ट्रक्चर है? नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस जो है इसको हम क्या लेंगे? इसको हम हैज़ लेंगे और ये हैड है, तो ये हैज़ हैड, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना? ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। यहाँ से हमने जज कर लिया इस फॉर्म से कि ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे ये हैज़ ही हो सकता है, ये इज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये हैड के साथ इस तरह से ये स्ट्रक्चर आता नहीं है। और ये हमें इस तरह से असेसमेंट हम कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म की कि यहाँ पे ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही है और मेरा टेंस कौन सा बन रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, देखें, इट्स इमोरल, इट्स इमोरल, तो इट्स अंडरस्टूड दैट दिस इज नॉट हैज। ये व्हाट्स द स्ट्रक्चर ओवर हियर? स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ये है कि यहाँ पे ये इमोरल जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे अगर हम ये एडजेक्टिव को हैज़ के साथ लेंगे तो ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। हैज़, हैव, हैड के साथ कभी भी एडजेक्टिव नहीं लगता, और जो वर्ब बी है इज़ आर एम वाज वर या बीन, तो उसके साथ एडजेक्टिव आ सकता है। तो लिहाजा ये अपोस्ट्रोफी एस हमें ये बता रही है कि ये इज़ है और ये एडजेक्टिव है। इस तरह से हैवंट है, ये कुडेंट है, शुडेंट है, यू हैवंट बीन प्रोलिंग अप इन दोज डेज, हैव यू, तो वो हैवंट की वो यूज़ हुआ हुआ शॉर्ट फॉर्म है। इजंट इट टू हॉट फॉर यू टू वॉक, इजंट इट। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, डिडंट दे यूज टू बी ग्रे। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए ये एग्जांपल को मैं जस्टिफाई करूँगा। Didn't they used to be grey? Used to be grey. यहाँ पे मैंने didn't को, ये जो शॉर्ट फॉर्म है सब्जेक्ट से पहले लेके आया हूँ, इंट्रोगेटिव बनाया मैंने, सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव बोला है। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि मैं अगर लिखता हूँ did not they used to be grey, तो ये रॉन्ग है। हम इंट्रोगेटिव में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को जब शॉर्ट फॉर्म से हम बनाते हैं तो डिडंट, कुडेंट, वुडेंट, हैवंट, शुडेंट, इजंट, अरेंट और एंट को शुरू में हम ला सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम ये नहीं कर सकते डिड नॉट, इज़ नॉट, और नॉट या एम नॉट, ये हम स्टार्ट में यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, यूँ हो सकता है, अब नेगेटिव सिर्फ बना सकते हैं, दे डिडंट यूज टू बी ग्रे, तो यहाँ पे अब ये नेगेटिव है। हाँ, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दे डिड नॉट यूज टू बी ग्रे, लेकिन हम ये वाले जो डिड नॉट है या डू नॉट या इज नॉट को इस तरह से हम नहीं ले सकते। हम शॉर्ट फॉर्म में डिडंट, कुडंट, वुडंट, शुडंट को शुरू में लगा के इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर वो डिड नॉट लगा देता है, डिड नॉट दे यूज टू बी ग्रे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डिडंट ठीक है। इस तरह से वो कहते हैं इजंट इट टू हॉट फॉर यू, इजंट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग, टू डू मच वॉकिंग। तो यहाँ पे इजंट ये हम शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज़ किया। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि किस तरह से इनको
तो अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप पूरी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे कि आपको टेंसेस को और वर्ब को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।